नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, शिल्प गुरु गोपाल सैनी की बेटी गरिमा सैनी, जिन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय और कला से जुड़ने का फैसला किया, और आज उनके इस निर्णय से न सिर्फ वो कामयाब हुई है, बल्कि राजस्थान की ब्लू पॉटरी की कला को अपने युवा विचारों से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में अपने पिता को संपूर्ण समर्थन भी दे रही है। गरिमा सैनी ने अपने पिता की पारंपरिक कला और व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए समकालीन कला से आधुनिक उत्पाद बनाए जो युवाओं को खूब पसंद आए। यही नहीं, आज नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में आप ब्लू पॉटरी प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रही हैं और फिल्म स्टार्स, राजनेताओं को इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट से परिचय कराकर राजस्थान की गरिमा को बढ़ा रही है। गरिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस एपिसोड में। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मेरी कला की जर्नी बस शुरू हुई है और मेरी कोशिश है कि जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है उसको मैं पूरी दुनिया में ले जा पाऊं और लोगों को बता पाऊं कि क्यों ये कला इतनी नायाब है, अद्भुत है, और क्यों ये इतनी अलग है बाकी कलाओं से और दुनिया में जितनी भी तरीके की पॉटरी होती है उससे। गरिमा, दैट्स सो मॉडेस्ट ऑफ यू कि आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन हमें ये पता है कि आप अपनी इस यात्रा में शुरुआत तो कभी कर चुकी थी। आज तो आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। तो हमारे ऑडियंस आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस यात्रा की शुरुआत एक्चुअली कब और कैसे हुई। आपका जो फ्लेयर था, आपका जो बेंट था टुवर्ड्स दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट पॉटरी, ये कैसे हुआ? जैसे कि आपने बताया, मेरे पिता का नाम शिल्प गुरु गोपाल सैनी है, तो इस कला के साथ तो मैं जन्मी हूँ, तो इसके साथ और इसके प्रति एक रुझान और अट्रैक्शन तो बचपन से रहा है। बट 9th क्लास से मैं मेरे डैड के साथ जाती थी, और क्रिएटिव चाइल्ड में आई थिंक बचपन से थी, so I used to go with dad and take lectures and talk about the craft. That time, that was the only role that I used to get. But when I did my graduation and then my master's in business, I was looking for different opportunities and career perspective, and I got a lot of job offers and everything. But then my dad came in and he was like, you are a very creative person, and if somebody like you, educated with broader mindset, come into this craft can go beyond this city, this country, around the world. And I was always very creative child and was looking for something challenging, also at the something which makes me meet new people, talk about, and to share my culture. I'm a full Jaipur baby, born, brought up, and love every kind of. And also, I'm born in a joint family, so I have this hardcore family values in me. So when my dad gave me this offer, and I was like, okay, let's give it a shot. But I at that time didn't knew that I will like totally fall in love with this craft. So yeah, like 7 years back, I started my journey and continued with this as my full-time profession. And I think since then there is no turning back. Every day, this craft make me fall in love with this bit by bit, more and more. Yeah. गरिमा, देखा गया है कि जो हमारे युवा है, द यूथ, द यंग पीपल, भले ही वो राजस्थान के हो, राजस्थान के बाहर के हो, क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स उन्हें बहुत पसंद आते हैं। एस्थेटिकली यस, दे आर सो ब्यूटीफुल कि दे आर ऑलवेज अडोर्ड बाय एवरीबडी एंड पीपल अप्रिशिएट द क्राफ्ट्समैनशिप एंड एवरीथिंग। लेकिन एज अ करियर उसको लेना ये कम दिखाई देता है। नॉर्मली यूथ में ये नहीं देखा जाता है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको यूथ में, युवाओं में, कि जो इसको अपने करियर के रूप में ले रहे हैं। ऐसे में आपने इसे करियर के रूप में अपनाया। आई एम श्योर कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का सामना आपने जरूर किया होगा। वुड यू लाइक टू शेयर इट विद आवर ऑडियंस? Absolutely. So I think no journey can lead you to success if you don't find difficulties or if things comes easy to you. So I had my own challenges, difficulties while I started, because we come from a generation where we can get everything on a click. So, and this craft needs a lot of patience. So I think the first challenge was within me. Like as you say, like if you need to fight something, you first need to fight from yourself. So the first challenge was from me myself, that I need to be more patient,
more open and more, slow in terms of curation of my craft. And then I think the industry, because it was the very male dominating sector, it still is. And I am trying my best to get more and more women from around to join hands and to curate this craft with them and to give those women work from home. So, and I think initially people in the industry don't even thought that, I would be carrying this craft. A lot of people used to, I think, mock because they could not say anything on my dad's face. So they used to talk, and I can feel it. We have those sixth sense. We are women, as you can sense that we know that what if somebody is saying anything negative about us. So I think a lot of people say to my parents also that you have given so much of freedom to your daughters. So I think those were the initial challenges. But now when they see me so dedicatedly uh, indulge in the craft and in my journey and the kind of love I'm getting and kind of work I'm doing towards this particular craft. So I think I have made a difference, and I will make a difference, and I know I will do it because I have my family as my back support. So yeah. We are quite sure about it कि अभी आपकी वाकई जर्नी की शुरुआत हुई है, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। बिल्कुल। गरिमा, जयपुर ब्लू पॉटरी वर्ल्ड फेमस है, डिमांड भी बहुत है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि आर्टिजन्स को एक मार्केट नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है, और आप जैसे युवा जो कि इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को अपना चुके हैं, वो ऐसे में क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरे को लगता है इस कला को आगे नहीं बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण भी जो कारीगर इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कारीगर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड हैं। तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो कितना नायाब चीज वो बना रहे हैं और कितनी मेहनत लग रही है। मैं दुनिया की कई कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ फॉर माई क्राफ्ट, एट द सेम टाइम फॉर टीचिंग पीपल अबाउट द क्राफ्ट. So I've seen people that how much they value even like a basic handicraft that they curate in their country. But I think it's also a default in our education system that people have that mindset that artisans are people who need to look poor, and that it is not something from which you can make a lot of money. So I think that lot of mentality also is one of the reason that is pulling back and keeping the audience as well as the artisan in that nutshell. But I think if they put their more creative angle to the craft and portray more of their own vision through these craft, I think we can suppress the world with our craft, because I think India is so enriched with them. We have so much, not just in a city, but if you see, even every district has its own beautiful craft altogether. So that I would like to add. यानी कि कहीं ना कहीं इनोवेशन की जरूरत है, और अगर युवा उससे जुड़ जाते हैं तो इनोवेशन बिकम्स अ लिटिल इजियर। डे टू डे लाइफ में अगर उसकी एप्लीकेशंस होंगी, कहीं ना कहीं उससे जरूर मार्केट क्रिएट करने में सहूलियत मिलेगी। जरूर, बिल्कुल जी। ब्लू पॉटरी में आपकी बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमने देखा, तो ऐसे में डिजाइन की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ है, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मेरा जो मेजर इंस्पिरेशन एरिया है दैट इज नेचर, मदर अर्थ। बिकॉज आप जैसे जैसे जहां जहां जाते हैं, कुछ देखते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है आसपास मेरे जो लोग हैं उनसे भी मुझे हर स्टेप पे एक इंस्पिरेशन मिलता रहता है। So I think that is the main source of energy and inspiration in my life. And what would you say would be the greatest source of inspiration? इनमें से nature तो एक है ही जो हमें हमेशा इंस्पायर करता रहता है, लेकिन क्या कोई ऐसी पर्सनालिटी, क्या कोई ऐसा फिगर है, not necessarily only in blue pottery but in otherwise also as an artist, who is your greatest inspiration? I think it would be my mother. My mother is a music teacher, and at the same time she has made us such a wonderful woman, and she has given us so much of freedom and
that kind of mindset that we can fight in any circumstances. Whenever we failed, she was always so strong, that she has taught us that in the chaos you need to be more calmer than. And when we were in a phase of our success or we get achieve something, she's always very neutral. Okay. And then she inspired us to be like, to do more, to make her proud. So I think all of my father, my sister, and me, our main source of energy comes from my mother, because she has been there forever. That's wonderful. That's really, really wonderful. गरिमा, आपकी छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा अचीवमेंट हुआ है, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से आपका जुड़ना। ये किस तरह से संभव हुआ और होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के में पहुंचना पहले तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। इसका श्रेय जाता है नीता अंबानी के खुद के ही एक वेंचर को, जिसका नाम है स्वदेश, जो रिलायंस इंडस्ट्री जल्दी ही लॉन्च करेगा। आई कांट टॉक अबाउट दैट मच, बट इट वाज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ दैट ब्रांड in that particular event, and we were called to, like, I think from all over India, 7 crafts were called down, so that people who are coming from all over the world can see and get a glimpse of what they are going to launch very soon. So yeah. कैसा महसूस हुआ आपको इतने एक बड़े वेंचर से जुड़ना, उसका हिस्सा बनना? बहुत अच्छा, मतलब even when we were planning and there was a lot of packing and selection and continuous meetings going with the team, which was taking care of all the arrangements there, we never thought that it would be this grand. But when we were there and we saw people and we saw the kind of love, appreciation that our craft got, and a lot of people, I think most of them were not aware about that, what is Blue Pottery. So I think I'm happy that I'm able to educate like a very good section of the society about this craft. And I think that makes me feel really proud and happy about it. And मुझे तो ऐसा लगता है गरिमा, आई एम श्योर आपको भी लगता होगा कि इस तरह से जब हम कुछ ऐसे काम होते हैं, जब जैसे कि आपके साथ हुआ नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से जुड़ना, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जब मिलता है ऐसे हमारे क्राफ्ट्स को, तो आई एम श्योर कि जो भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलता है। बिल्कुल, and I think that is the whole initiative about it, and I talk in lot of my chats and whenever my students come here to learn this craft, that it is not about the end result, it is also about the journey. And I think people have stopped enjoying the journey because they put so much of emphasis on the end result that they just lose the essence of the journey altogether. So जब ऐसी जगह पे हम पहुंचते हैं और हमें इतना अप्रिसिएशन मिलता है एंड पीपल हमें इतना पसंद करते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग, a value added craft, and I think they want to learn and pursue it. So I think it's a good initiative altogether to get down such crafts on such a huge platform. और अब गरिमा आपसे जानना चाहेंगे आपके विजन के बारे में, कि आप एक अचीवर तो है ही और आपने कुछ करके दिखाया भी है, लेकिन आई एम श्योर कि लाइफ में कहीं ना कहीं एक विजन आपका जरूर होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। तो हम चाहेंगे आपसे आपका विजन के बारे में जानना। ठीक है, अभी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बस शुरुआत है, पर जहां तक मुझे जाना है वो मेरा एक सिंपल सा विजन है कि मैं इस कला को पूरे विश्व में इतना फेमस कर पाऊं कि लोग इस कला को जाने, पहचाने और इसकी उतनी ही वैल्यू जितनी की और कंट्री की पॉटरीज की होती है। सो वो मेरा इकलौता मिशन है अपनी लाइफ का, कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस कला को उस लेवल पे पहुंचा पाऊं कि व्हेन पीपल टॉक अबाउट दिस क्राफ्ट दे टॉक लाइक, डू यू नो व्हाट इज ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर? Like it would be like a big thing altogether. So I want that excitement in their heart and soul, that they're talking about something really huge and big. और हमारी शुभकामनाएं इस सफर में आपके साथ पूरी तरह से है कि जहां आप पहुंचना चाहती हैं वहां जरूर पहुंचे और इसी तरह से हमारे राजस्थान का नाम भी आगे बढ़ाएं।
बहुत ही अच्छा लगा आज गरिमा आपसे इस तरह की बातचीत करके, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में जो युवा होंगे, जो जो इस उम्र के लोग हैं, जो कि आगे कुछ ना कुछ बहुत बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें उन्हें रोकती हैं, वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे आज के हमारे इस छोटे से लेकिन बहुत वैल्यूएबल सेशन से। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर? हमें बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ opportunity to be on your platform. It's an honor and I hope I can make a bit of difference to the women and daughters out there. And I would like to say to the young generation that if you can think it, you can do it. Because बिना सोच के तो आप कुछ कर नहीं सकते. और आपने जिस मुझे इतना सम्मान दिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई होप आई मेड अ डिफरेंस टू योर इनिशिएटिव एज वेल. डेफिनेटली गरिमा, डिफरेंस तो आप ला ही चुकी है, लेकिन हमारा जो काम है वो होता है आप जैसे जो अचीवर्स हैं उनके अचीवमेंट्स को, उनकी सोच को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इंस्पायर करना, और ये समझाना कि हमारे राजस्थान में कहीं कम दम नहीं है, हमारा राजस्थान भी है सक्षम राजस्थान. बिल्कुल. और इसी के साथ मैं इजाजत लूंगी आपसे गरिमा, विद ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर.